अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश टारगेट पेपर 2022 फर्स्ट ईयर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ कराची बोर्ड। फॉर फर्दर डिटेल्स हम पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं इंग्लिश पेपर के लिए। एज वी ऑल नो दैट इंग्लिश इज लैंग्वेज, सो इन लैंग्वेज पेपर presentation must be necessary. Make a proper heading of every question, write in proper and a good way. If you want to get highest marks in English paper, then must obtain full marks in multiple choice question MCQs. And we all know that MCQ is the first impression, so the first impression is the last impression. So अब जैसा कि सबको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो हमें इंग्लिश का पेपर जो है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी प्रेजेंटेशन को हमने अच्छा रखना है। एक प्रॉपर हेडिंग के साथ तमाम सवालात को करना है। और और हमें पता है कि एमसीक्यूज़ जो है इस बार ज़्यादा हैं, तो हमारे पास जो पहला पेपर भी आता है वो एमसीक्यूज़ का होता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आप अपने एमसीक्यूज़ की तैयारी पक्की रखें ताकि आपको जो इंप्रेशन है चेकर पे अच्छा पड़े। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते सेक्शन ए में देख लेते हैं। इसमें भी कह रहे हैं कि आप तमाम चैप्टर्स को बुक में अच्छी तरीके से पढ़ें, पोइम को, प्रोज को और प्ले को पढ़ लें ताकि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर अप हो सके। इसके अलावा आप 10 ईयर से तैयारी करें तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन बी हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि 40 मार्क्स का है और हमें अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन and at least two from each subsection. Each question carries 4 mark. हमें 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हमें कितने पार्ट गिवन है? 1 पार्ट गिवन है, 2 पार्ट गिवन है और 3 पार्ट गिवन है और 4 पार्ट गिवन है। इसमें से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको एटलीस्ट जो मिनिमम गिवन है वो कितना गिवन है कि आपने हर उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सब सेक्शन नंबर 1 है इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक नंबर 1, इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दिस सेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना प्रोज के लिहाज से, तो वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रिकन हेड ड्रिल, यूनाइटेड नेशन, साइंस एंड सोसाइटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आपको वो जो रह गए जो नहीं इंपॉर्टेंट बताए गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसको भी देखना है चैप्टर्स को, क्योंकि वो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सवालात के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आते हैं इसमें से सवाल, तो वो ये 4 हमारे पास चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहले सवाल देख लेते हैं। व्हाई डिड एवरीवन सस्पेक्ट Mr. King as a criminal in the hostile witness? Why does the writer apply the word terrible to the first year of Pakistan's history? Why was there a roar of laughter when the author left the bank? Describe an act of heroism that took place after the Birkenhead sank. Why does science fail to solve social and political issues? Or what does Birkenhead drill mean today? What would have happened if there had been a panic on Birkenhead? Differentiate between scientific and unscientific work. Or why did Kashmir not join Pakistan? How far is it successful in solving world issues? Or why did the author want to open account? What was the real story related to the castle of Sarnagrade? Describe the work of International Bank, WHO, and FAO, or what inspired the foundation of UNO, United Nations Organization, और WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारे पास सब सेक्शन आता है सब सेक्शन 2, सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस सेक्शन। अब इसमें भी सेक्शन, तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे पास 4 गिवन है, लेकिन आप लोगों ने तमाम पॉइंट्स को भी मद्देनजर रखना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आती है द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, लूसी ग्रे, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, द डिजर्टेड विलेज। पहला सवाल है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु लिव्स अ हैप्पी लाइफ, और व्हाट इज सोनेट, what were the toys by which the child consoled his heart, or what was angel writing on the book,
What was the news given by soldier to Napoleon, or why was King John jealous of Abbott? What was the beauty of Urban before it was deserted? Briefly describe the tragic incident happened to Lucy Gray. How does an patriotic person meet double death? What does Wotton's happy man uses for his defense? What inspired were to write sonnet composed upon Westminster Bridge? What how is the song Under the Greenwood Tree relevant to the Duke's situation? What are the theme central idea of the poem? I had reached your doorstep under the greenwood tree, lines from the lay of last minister and the character of a happy life. इसके सेंट्रल आइडिया भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा. और उसके बाद हमारे पास आता है सब सेक्शन 3 है, 2-1 एक्ट प्ले. ये हमारे पास प्ले की बुक है, और इसमें से सवाल जो इम्पोर्टेंट हम उसको देख लेते हैं. इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है द काउंट द काउंट वाला, ठीक है, और प्रोग्रेस भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, हम उसको देख लेते हैं. व्हाट वाज द इन्वेंशन ऑफ हेनरी कोरे, और हु वाज एरी, हाउ डिड ही डाई, व्हाट इज अ ड्यूल, हाउ इज इट fought, or what is the opinion of Henry Corey about women? What did Albert do when he came to know about his father disgrace? What happened on the day of duel, or describe the tragic end of Morcerf? What did Monte Cristo advise Albert, or what help did Albert ask from Beauchamp, and why? What devilish plot was hatched against Edmund Dantes, and who hatched it? What were the charges against Morcerf, or what did the Countess do to save Albert? How and why did Monte Cristo disgrace Morcerf's family? What do you think that Mrs. Melton is justified in killing her brother? फिर सब सेक्शन 4 आता है हमारे पास ग्रामर का. करेक्ट करेक्शन ऑफ एरर्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, होमोफोन्स, स्मैश द कॉलम्स. इसको आप 10 ईयर से देख सकते हैं. उसकी तैयारी आप लोगों की पक्की हो जाएगी. 10 ईयर से ज़्यादातर आते हैं ये, और यहाँ पे बुक के पेजेस में मेंशन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. और सेक्शन सी में हमारे पास आता है डिटेल आंसर क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स का होता है. इसमें आपको पैराग्राफ लिखने होते हैं, लेटर और ट्रांसलेशन होती है. तो जो इस बार के जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हम उनको देख लेते हैं. एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सिटी, इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन स्टडीज, प्रोज एंड cons of social media or phone, impact of inflation and cricket match or मणिपुर इलेक्शन 2022. और लेटर जो है, लेटर टू द एडिटर, टॉपिक्स कितने हैं इसको भी देख लें. इन सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, वाटर क्राइसिस, वाटर शॉर्टेज, इनडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. ये तमाम जो अगर आप लेटर्स लिखते हैं तो ये 3 टॉपिक के लिए कवर हो सकते हैं एक ही लेटर. इंक्रीजिंग ट्रैफिक जैम्स, हैजर्ड्स ऑफ ट्रैफिक accidents to traffic and traffic jams, load shedding in your city, energy crisis in your city, frequent power failure, increasing rate of street crimes, law and order situation, and translation भी आप 10 ईयर से करें तो आप लोगों की पक्की तैयारी हो जाएगी. Practice from 10 year in colleges preliminary exam paper. For translation must practice tenses, condition, sentences, model verbs and proverbs. ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा. और भी बहुत सारे जो हैं सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हम लोगों ने आर्ट्स के डाले हुए हैं अपने चैनल पे, तो आप इसको प्लीज़ काइंडली विजिट करें ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.